हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको पता है इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स इस पे डिस्कस किए हुए हैं और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। तो अब से पहले हमने जो 3 लेक्चर्स पढ़े आपने उनमें देखा होगा, सुना होगा कि वहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम था उसके ख़िलाफ़ लोगों की आवाज़ बुलंद हुई। तो वहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग जो है सामने आए, उन्होंने एक असम्बली बनाई और जो है एक उसको चैलेंज किया मोनार्की को, किंग को। और फिर किंग ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया था थर्ड स्टेट ने, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद क्या होता है कि फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम, जो किंग का सिस्टम था कि एक बादशाह बने और वो डिक्टेटर हो और वही सारे काम करे, तो वो सिस्टम जो था गवर्नमेंट का, वो मोनार्की सिस्टम फ्रांस में एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद फ्रांस जो है वो बन गया रिपब्लिक। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। The situation in the France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with King of Persia, rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war of people against kings and atrocities all over Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roget de l'Assault. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris, and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. तो क्या होता है बच्चों के यहाँ पे फ्रांस में जब मोनार्क जो था, किंग लुइस 16, तो उसने एक बार तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम भी कर रहा था, लेकिन वो सीक्रेटली जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे पर्शिया है और उनके नेबरिंग कंट्रीज़ जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ राब्ते में था, लेकिन वो सीक्रेट में नेशनल असम्बली से छुप के उनके साथ बातें कर रहा था। और एक प्लान तैयार हो रहा था कि 1789 से जो भी मामलात हुए हैं, यानी किंग को जैसे चैलेंज किया गया है, असम्बली बनी है फ्रांस में, ये सारा सिस्टम जो है इसको चैलेंज किया जाए और इसके ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही थी पर्शिया और ऑस्ट्रिया में ख़ुसूसन। और जब तक ये साजिशें अमल में आती, जब तक इस बारे में कोई कार्रवाई, ये मोनार्क जो आसपास के बादशाह थे, क्योंकि उनको भी ख़तरा लग रहा था कि उनके मुल्क में भी ऐसा ही हो सकता है कि बादशाहों को चैलेंज किया जाए। तो जब ये हो पाता उससे पहले असम्बली जो थी फ्रांस की, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, उनके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। हज़ारों की तादाद में जो है वॉलंटियर्स वो प्रोविंसेस से निकल के आर्मी में ज्वाइन हो गए और
ये ऐलान कर दिया गया कि ये बादशाहों के ख़िलाफ़ और जुल्म के ख़िलाफ़ पूरे यूरोप में एक लड़ाई होगी। और पेट्रियोटिक सॉन्ग जो थे, हुब्बुल वतनी के गाने तराने गाए जाने लगे। और उन गानों में से एक अहम गाना जो था वो था मैचलेस, और ये कंपोज किया था रॉबर्ट डीलैल एसल ने। और ये पहली बार जो है ये मार्सेल्स में गाया गया, पेरिस में जब लोग बाहर निकले। और फिर बाद में यही गाना जो है ये फ्रांस का कौमी तराना बन गया। The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties to people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with tasks of earning a living and looking after their families. Lower sections of population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society. Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of actions. तो ये रिवोल्यूशनरी वॉर्स जो थी, इससे इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए, डिफ़िकल्टीज भी आई लोगों को। लेकिन जब जो मर्द हजरात थे वो लड़ने के लिए चले गए, तो औरतों ने पीछे से जो है घर का जो खर्चा करना, अर्निंग करना वो, और घरों की देखभाल जो थी वो संभाल ली। बड़ी तादाद में जो लोग थे वो रिवोल्यूशन को आगे ले जाने के लिए मुत्तहिद हो चुके थे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में बना था, इसने पॉलिटिकल राइट्स दिए थे, सिर्फ रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को नहीं दिए, सबको दिए थे। और पॉलिटिकल क्लब्स जो थे ये रैलिंग पॉइंट बन गए थे, यानी यहाँ पे आके लोग अपनी बात कह सकते थे, एक दूसरे के सामने रख सकते थे, बातें शेयर कर सकते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज that of Jacobians, which got its name from the former convent of St. Jacob in Paris. Women too had been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands. तो अब जो क्लब्स थे इनमें औरतों भी हिस्सा लेने लगी थी बढ़ चढ़ के। और इन क्लब्स में से सबसे मशहूर जो क्लब था वो था जैकोबियन क्लब। और ये इसका नाम जो से पड़ा था ये फार्मर कन्वेंट था एसटी जॉकेब पेरिस का, उसके नाम से। और वो औरतें जो एक्टिव रहना चाहती थी पॉलिटिक्स में, वो भी इन क्लब्स का इस्तेमाल कर रही थी, अपने क्लब्स बना रही थी। हम इस चैप्टर के सेक्शन 4 में इनके बारे में और भी देखें सुनेंगे। The members of Jacobin Club belonged mainly to less prosperous sections of society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, painters, as well as servants and daily wage workers. Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobians decided to start wearing long, tripped trousers similar to those worn by dockworkers. This was to set themselves apart from fashionable sections of society, especially nobles who wore knee breeches. तो ये जो जैकोबिन क्लब था, इसमें जो लोग थे, जिस जिस जो लोग थे, ये सोसाइटी के लेस प्रॉस्पेरस यानी कम आमदनी वाले लोग जो थे वो शामिल थे इसमें। जैसे शॉपकीपर्स थे, आर्टिशियंस थे,
जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ियाँ बनाने वाले, पेंटर्स वगैरह। तो a large group of the Jacobin decided to start wearing long trousers similar to those worn by dock workers. डॉक वर्कर्स की तरह इन्होंने पजामे लगाने की बात ठान ली थी. So this was set themselves apart from fashionable sections of the society, especially nobles. और उन्होंने ये ठान ली कि अब वो जो सोसाइटी के वो नोबल्स हैं, फैशनेबल लोग हैं, उनकी तरह नहीं रहेंगे और डॉक वर्कर्स की तरह ही काम करेंगे. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फोटोग्राफ्स. ये देखिए. तो फिर क्या होता है? इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबियन planned an insurrection of the large number of Parisians who were angered by the short supplies and high price of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of health, got the right to vote. तो ये समर्स थे, 1792 की बात है. जैकोबियंस जो थे, इन्होंने जो पेरिसियंस जो थे वहाँ से जो उनको वो गुस्से में थे. किस वजह से? क्योंकि सप्लाईज कम हो रही थी और चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही थी. तो अगस्त 10 अगस्त की बात है कि सुबह के टाइम उन्होंने जाके पैलेस जो था बादशाह का, उसको उस पर हमला कर दिया. वहाँ पे जो उसके गार्ड्स थे उनको मार दिया और बादशाह को जो है वो बंदी बना लिया, कैदी बना लिया. और फिर असम्बली ने वोट किया कि जो रॉयल फैमिली है, यानी बादशाह और उसके वज़ीर और बाकी जो उसकी फैमिली है, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, उनको इम्प्रिजन कर लिया जाए. और उनको इम्प्रिजन कर दिया गया. फिर इलेक्शंस हुए और उस डेट से 21 साल की उम्र से ऊपर के जो सभी लोग हैं, बगैर इसके कि इस भेदभाव के कि उनके पास कितनी दौलत है या क्या है, उनको वोट देने का हक मिल गया. द न्यूली इलेक्टेड assembly was called the convention. On 21st of September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the state. तो क्या होता है कि ये सितंबर 21 की बात है. जो नई असम्बली थी, जिस नई असम्बली बनी फ्रांस में, उसको कहा गया कन्वेंशन, नाम दिया गया. और उसने क्या किया, 21 सितंबर 1792 को जो मोनार्की सिस्टम था, जो किंग का गवर्नमेंट सिस्टम था, उसको फ्रांस में एबॉलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक. यानी यहाँ पे लोग सरकार चुनते हैं और जहाँ पे लोग सरकार बनाते हैं और जहाँ पे लोग हेड ऑफ़ द स्टेट को भी चुनते हैं.